Good afternoon, dear students. I am with chapter number 2, sexual reproduction in flowering plants. First of all, sexual reproduction means a reproduction where is the two parents are there. Meiosis means gametogenesis process is there. Fusion of gametes is there, means fertilization. Because we have already discussed in case of the sexual reproduction, there is the 3 phases are there: pre-fertilization, fertilization, and post-fertilization. मीन्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 3 फेज होते हैं: प्री फर्टिलाइजेशन 1, फर्टिलाइजेशन 2 और पोस्ट फर्टिलाइजेशन 3 फेजेस रहेंगे। और ये आपसे यहाँ पर जनरली फ्लावरिंग प्लांट्स की बात आ रही है, तो जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स हैं वो आपके पास में सबसे एडवांस ग्रुप है, प्लांट ग्रुप का सबसे एडवांस ग्रुप है। तो उसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। पहले प्लांट के अंदर वेजिटेटिव ग्रोथ होती है। कौन सी ग्रोथ होगी बोलो? वेजिटेटिव ग्रोथ। और उस वेजिटेटिव ग्रोथ के बाद प्लांट में बन जाता है फ्लावर। रियली द फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इन प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट्स में रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के नाम पे सिर्फ और सिर्फ फ्लावर होता है। ओनली द फ्लावर इज देयर। Flower is the reproductive structure in the flowering plants. Now this time, what are the parts of flower? In case of different parts of flower, flower just consists with a special part. That is the pedicel. Base is known as the thalamus, and later on, 4 whorls are there. Majorly 4 whorls. How much? 4. So first of all, you have just go through the diagram, then your answer. आप फ्लावर के डायग्राम को ड्रॉ करेंगे ऐसे, और बाकायदा किसी भी प्लांट से फ्लावर को लेकर के सेपरेट भी कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। और यहाँ से ये स्ट्रक्चर यूँ बनेगी, ये स्ट्रक्चर आपके पास वैसे बन जाएगी। रिमेनिंग पार्ट विल बी देयर, एंड लेटर द मोस्ट अट्रैक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। फ्लावर का सबसे अट्रैक्टिव पार्ट आता है वो इस टाइप से रहेगा। एंड लेटर ऑन द ग्रीन लीव्स लाइक स्ट्रक्चर एंड बेस विल बी एट दैट फोल्ड। दैट इज द कंप्लीट पार्ट ऑफ फ्लावर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज द पेडिकल, यानी जिससे फ्लावर लगता है प्लांट के ऊपर। दैट पार्ट इज द थैलेमस, and green leaf-like structure is the sepal, and attractive colored structure, that is the petal. And next, the male reproductive part, that is the stamen, and female reproductive part, that is the pistil. I mean, in a flower, the totally 4 whorls are there. First, number 1, that is the sepal. Second, number 2, petals. Number 3, androecium. And number 4, gynoecium. Sepals and petals are the accessory part, and each part of sepal is known as the calyx, and calyx is represented by the K. Next, petals, most attractive part of the flower, and that part is known as the petals, and petals is also known as the corolla, and corolla is represented by the C.
Androecium is the male reproductive part. So one thing is there, sepals and petals are not necessary for the reproductive phase. They are the accessory. Just attract the insect for the way of pollination. Okay? So simple thing is there. Androecium, male reproductive part. What type of part is there? Male reproductive part. And gynoecium, that is the female reproductive part. Male reproductive part have formed the male gametes. क्या बनाएगा बोलो? Male gametes बनाएगा. And female reproductive part gynoecium is there that have the female gamete is there. तो यहाँ पर मेल और फीमेल गैमेट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए कंपल्सरी होता है, इसलिए एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम both are the necessary for the flower. It means a flower which have contain the four whorls sepals. So androecium is generally represented by the each part is androecium is the stamen. There is the stamen is there, and female reproductive part there is the gynoecium, and that part is generally known as the pistil. Pistil is generally represented in the form of the carpel. Now this time we have discussed about the different parts one by one. Major part is the male reproductive part of the flower. अगर किसी भी फ्लावर से अपन लोग मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को सेपरेट करना चाहें तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका यही रहेगा कि फर्स्ट द पार्ट इज द एंड्रोशियम. एंड्रोशियम के ईच पार्ट को हम लोग स्टमेन कहते हैं. स्टमेन में टू पार्ट्स हैं. वन इज द एंथर and another is the filament. One is the anther and another is the filament. Two parts of the stamen. So just look it. There is the part of the stamen. That is the structure of stamen. In case of structure of stamen, that part is the anther. ये part कौन सा होगा? Anther. और इस structure को हम लोग क्या बोलेंगे? बोलो filament. That is the filament and that is the anther. And filament connect with anther. That region is also known as the connective region. What type of region will be? Connective. So anther, connective and filament is. Now this time we have discussed about the structure of the other part. There is the structure of एंथर. और ये आपके सीबीएसई में प्रीवियस में बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है. स्ट्रक्चर ऑफ एंथर एज वेल एज मेगा माइक्रोस्पोरेंजियम बोलो या एंथर बोलो, दोनों एक ही बात. इन जनरल केसेस में आप लोग बकायदा इसको डिस्कस करके प्लांट के फ्लावर को लेके देख सकते हैं. ये स्ट्रक्चर ऐसे दिखेगा. बाहर से दिखने में सीधा आप कहोगे दैट इज द बाइलोब स्ट्रक्चर. कितनी लोग है बताओ? टू. इट जस्ट कनेक्ट इन दैट फॉर्म. ऐसे कनेक्ट रहते हो सकता है फ्रीली ऐसे भी हो, बट डेफिनेटली द मैक्सिमम केसेस दे हैव द बाइलोब स्ट्रक्चर. तो ये आपके पास में बाइलोब स्ट्रक्चर, बाइलोब इन दैट फॉर्म. नाउ दिस टाइम वी हैव डू वन थिंग, वी हैव कट इट. जस्ट वी हम सपोज करें ये आपके पास में निकाले, आप इसको सेक्शन में यू कट. तो ये बाइलोब होगी और ट्रेटा चैम्बर्ड होगी. ट्रेटा चैम्बर्ड बोल दो, बाइलोब बोल दो, या ईच लोब इज द डाइथियस. ईच लोब इज द डाइथियस. आप इसको जैसे ये सेक्शन काटेंगे तो ये सेक्शन आपको काटते ही इस टाइप से आपको दिखेगा. ऐसे दिखेगा. और इसको आप एनलार्ज करके देखेंगे. देन दैट स्ट्रक्चर ऑफ एंथर जस्ट लुकिंग इन दैट. आप इसको यूं ड्रॉ भी करना सीख लीजिए साथ. इसको ऐसे लाइन को घुमा लीजिए, इस लाइन को यूं ले आइए, फिर इस लाइन को यूं ले आइए, इस लाइन को आप यूं ले आइए, फिर इस लाइन को यूं ले आइए और इस दोनों लाइन को यहाँ ऐड कर दीजिए.
that type of structure will be there. तो आप डायरेक्टली कह सकते हैं there is the two lobes, one and two lobe, इसलिए bilobe structure होगा. दूसरी बात, यहाँ पर आपके पास में each lobe contain the two chamber and total number of chamber is the four chamber. देखो one or two, one or two. Tetra chamber, tetra means four, four chamber हो गए, 1 2 3 4, four chamber. Now this time another structure will be there. In case of the part of the structure of anther, anther में जनरली अपने पास में 4 लेयर स्ट्रक्चर होती है. 4 लेयर स्ट्रक्चर. फर्स्ट ऑफ ऑल एपिडर्मिस, सेकंड एंडोथीशियम, थर्ड मिडल लेयर, फोर्थ टेपिडर्म. That type of structure will be there. First go through that structure. Outer layer में आप structure को ऐसे बनाएंगे. Only one cellular layer, that is the epidermis. Epidermis. That is the protector layer. इसके just inside में two cell layers रहेगी और उस two cell layer में भी fibers रहेंगे. And these fibers are generally, इसको बोलेंगे तो अपन एंडोथीसियम, but it is consist with alpha cellulose. What is the nature of alpha cellulose? Alpha cellulose is the hydrogen ratio. In the water के कम या ज़्यादा होने के बेसिस पे सेल की साइज इंक्रीज और डिक्रीज होती है, और इस सेल की साइज की इंक्रीज और डिक्रीज होने की वजह से आपके पास में जब एंथर का डिचेन होता है, एंथर बिखरता है, तब उस स्थिति में उस एंथर के डिचेन होने की पर्टिकुलर पार्ट को कंप्लीट करती है वो एंडोथीशियम करता है. और वो क्यों करता है? अल्फा सेलुलोज की वजह से. आपने देखा होगा बारिश के दिनों में लकड़ी के दरवाजे होते हैं, फूट जाते हैं, वो वाटर की कम होती है. सेम केस विद एंडोथीशियम. नेक्स्ट ये प्रोटेक्टिंग का काम भी करती है. नेक्स्ट थर्ड लेयर, दैट इज द parenchymatous type of cell. 1 2 3 cells layer will be there, and that is known as the middle layer. Middle layer केवल इसको प्रोटेक्टिंग का काम करेगी. और सबसे इनर मोस्ट पार्ट, मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, मल्टी न्यूक्लिएट डेंस साइटोप्लाज्म. मल्टी न्यूक्लिएट डेंस साइटोप्लाज्म, मल्टी न्यूक्लिएट एंड डेंस साइटोप्लाज्म. That type of structure is known as the tapetum. Tapetum is the innermost layer. Tapetum is the innermost layer. Innermost layer in the sense, innermost layer which have provide the nourishment or the nutrient for the developing embryo. जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है उसको नरिशमेंट और न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करवाने का काम करता है, वो टेपिटम करता है. टेपिटम के जस्ट इनसाइड में जो सेल्स रहेगी वो सारी डिप्लॉयड होंगी. तो इस टाइप की सेल को हम स्पोरोजीनियस सेल कहते हैं. स्पोरोजीनियस टिश्यूज कह सकते हो, कुछ फ्रूट्स में लेयर कह सकते हो. Those cells which have formed the spores, that is known as the sporogenous. Those cells which have formed the spore, that is known as the sporogenous tissues. Now this time, after that, the particular cells, gland-like structure will be there. That is known as the microspore. What term is there? Microspore. So that is the structure of the anther as well as the structure of microsporangium. There is the bilobe tetrachambered structure, and there is the totally 4 layers are there. Outermost epidermis, second layer endothecium, third layer middle layer, and fourth is the tapetum, and inner side is sporogenous tissues. Definitely there is a necessary, same question will be coming in different parts. When the anther are mature, when the anther are mature, और anther जैसे mature होता है उसके बाद में उसका decaying होगा ऐसे
बिखरेगा। पोलर ग्रेन्स रिलीज होंगे, जैसे ये वाला रीजन है, ये वाला यहाँ से यूँ ऐसे हो जाएगा, उससे पोलर ग्रेन रिलीज हो जाएंगे। तो डिचेन होगा वो हमेशा एंडोथेलियम से ही होता है। नेक्स्ट, नाउ दिस टाइम वी विल डिस्कस about the another part, especially after then the particular term will be there. There is the microsporogenesis. 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 In case of that part of microsporogenesis, what will be happen? Very simple aspect. First of all, we have the particular cell will be there. That is the PMC, pollen mother cell. pollen mother cell. पहला तो आपको ध्यान में देना है कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मेल गैमेट को बनाने का प्रोसेस है, या अनदर वर्ड्स कह दो कि जो आपकी माइक्रोस्पोर बनाएगा, माइक्रोस्पोर, और ये माइक्रोस्पोर सिर्फ और सिर्फ मेल में ही मिलता है, मेल में ही माइक्रोस्पोर मिलेगा। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर का पार्ट है। तो पोलन मदर सेल विच हैव द डिप्लॉयड, ये 2 एंड स्टेज में होगी, डिप्लॉयड सेल है, और इस डिप्लॉयड सेल में आपके पास में 2 एंड स्टेज होगा, मियोसिस होगा, और क्या होगा? Meiosis. By the meiosis or the reduction division, it have the change into the 4 haploid cells. Which cells is there? 4 haploid cell. Each total चेयर आपके पास में इन सेल को तो बोल देंगे माइक्रोस्पोर बोलेंगे, but these microspore are the 4, एक साथ में 4 होंगे, और ये सारे के सारे हैप्लॉइड होंगे एन स्टेज में। अगर यहाँ पर बाई द वे 24 क्रोमोसोम है तो इनके अंदर हर एक में 12 क्रोमोसोम ही होंगे। तो ये आपके पास में मियोसिस से बनेगा, मियोसिस रिडक्शन होगा, और यहाँ इस मियोसिस रिडक्शन से आपके पास में माइक्रोस्पोर बनेंगे जो 4 होंगे, और ये स्पेशली कैलोज से जुड़े रहते हैं, कैलोज इनको जोड़ के रखता आपस में, इसलिए सेपरेट नहीं होते। तो इस पूरे प्रोसेस को माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बोलते हैं। Now understand the term is, what is microsporogenesis? Microsporogenesis is the process where is the pollen mother cell by the meiosis process form the microspore, and that process is known as the microsporogenesis. Microsporogenesis. Now understand the microspore will be arranged in different form. Sometimes what will be happen? All these 4 microspore are arranged in linear form also. ये आपके पास में इस टाइप से linear form में अरेंज हो सकते हैं, वो टेट्राहेड्रल फॉर्म में ऐसे अरेंज हो सकते हैं, वो आपके पास में इस टाइप से टी शेप में अरेंज हो सकते हैं, वो आपके पास में क्वाड्रेट फॉर्म में यूँ ऐसे अरेंज हो सकते हैं। Different arrangement will be there. Different arrangement will be there in the part of the microsporogenesis, and their microspores are arranged in different form. Now this time development of pollen grain. Microspore to pollen grain. Microspore to pollen grain. In that case, what will be happen? Development of pollen grain. Simple question will be there. In case of the part of pollen grain, first of all, the particular cell of the pollen microspore for the primary cell. इसके लिए माइक्रोस्पोर प्राइमरी सेल होगी। इनके अंदर पहले इनकी साइज इंक्रीज हो जाएगी, साइज इंक्रीज होते ही वैक्यूल बन जाएगा, न्यूक्लियस होगा वो वॉल की तरफ डिस्प्लेस हो जाएगा। लेटर ऑन में क्या होगा? वापस आपके पास में कैरियोकाइनेसिस होगा, आई मीन न्यूक्लियर डिवीजन होगा। न्यूक्लियर डिवीजन होते ही आपके पास में 2 न्यूक्लियाई बन जाएंगे, डिफरेंट पार्ट्स में अरेंज हो जाएंगे। इरेगुलर ऑफ साइटोप्लाज्म का अरेंजमेंट हो जाएगा इस टाइप से, और इसके साथ में वैक्यूल बन जाएगा। Here is the 2 cell stage, 2 cell
and that is the two cell stage which will be content the surrounding layer will be there, and now this time the pollen grain will be there, and that pollen grain is only or only two cell stage. One cell, that is the wall part, that is known as the generative cell or the germ cell. Another is the vegetative cell as well as somatic cell. तो अपने पास में कितनी सेल स्टेज हुई? टू सेल स्टेज. वन इज द जनरेटिव सेल जो आगे जाकर के मेल गैमेट बनाएगी, एंड अनदर हो जाएगी सोमेटिक सेल या वेजिटेटिव सेल जो पोलन ट्यूब बनाएगी. And in that case, only or only that is the two-celled stage. Sometimes that cell structure will be three-celled also. Three-celled means there is the three cell. In that three cell, two cells are the male gamete. ये CBSE में before last year question आ चुका है. Two-celled stage, two cell are the male gametes, and one cell that is the vegetative or the somatic cell. And totally number of cell that is the three cell, and nearby 20% of angiosperm में आपके पास में three cell stage होगा और 80% angiosperm में two cell stage. ओके, थैंक्स. आप इसको YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा तक हर एक तक पहुँचाने का प्रयास करें. और नेक्स्ट हम पोलन ग्रेन के साथ में वापस आपके